Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9 and a very warm welcome to English to Chase Academy. Alright. So students, this is our lecture number 3. कल हमने एक SLO किया था जो कि आज हम रिपीट करेंगे, हम इसे रिवाइज करेंगे. Use all types of tenses correctly in speech and writing. And what did we do? We learned about future tense और उसकी सारी वेरिएशंस हमने देखी थी विद एग्जांपल्स. आपको वर्कशीट भी दी थी, आप आई होप आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है. नाउ दिस इज लाइक अ रिवीजन. व्हाई? बिकॉज it needs more practice. So I've included so many activities in the lecture and I'll send more resources for practicing the future tense. Today we will learn something more in future tense. All right. Now, we have revised this image. When we are talking about past, we use past tense. When we are talking about present, we use it. And it's not only about the present, it's about routines, habits, facts, assertive, declarative statements. वो सारी जो है present में आ जाती है. ठीक है. Then you have future. Now, we use future to tell something about what is going to happen in after some time. It could be after hours, it could be after days, after years, or even decades. So let's quickly fill in the correct verb forms. So this is a very comprehensive and collective kind of activity where you have to test all of your knowledge of previous tenses जो हमने पढ़े थे. Past tense, past simple, perfect continuous and perfect continuous, and also present perfect, present simple, perfect continuous and perfect continuous. All right. So let us start. You can have your you can see these hints given in the brackets. I love traveling in the country, but I not like losing my way. Yes. कौन सा verb form आप इसमें यूज करेंगे? All right. I do not. All right. या don't आप कह सकते हैं. Like losing my way. I on a trip the other day, but my trip took me longer than I. Now, let's see. हम past की अब बात कर रहे हैं. I love traveling in the country, but I do not like losing my way. This is actually present tense. All of it. I went. पिछले दिन की बात कर रहा है ना. I went on a trip the other day, but my trip took me longer than I. We are talking about past. Yes, Mohammed. तो क्या करेंगे? Expect. Expected. All right. I'm going to Woodford Green. I say to the conductor as I. अब हम ये सारा जो है past का है. तो say को कैसे convert करेंगे? किस verb form में? Yes, बताएं. Said. Said. I said to the conductor as I. Get का क्या हो जाएगा? Got on the bus, but in the past I didn't know where it is. I tell you where to get off, answered the conductor. Yes, answered the conductor. Conductor ने जवाब दिया. हम पास की बात कर रहे हैं. I told you. Yeah, I have told you where to get off, answered the conductor. I sat. ठीक है? I sat in front of the bus to get a good view of the countryside. After some time, the bus stopped with ed. All right. Muhammad will tell me the spellings of stop.
STOPED। क्या ये स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है जी? ये स्पेलिंग्स ठीक है? नो, डबल पी आएगा, स्टॉप्ड। ठीक है, ऑलराइट। आई रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट आई बी, अब आपको पता है बी की वो सारी हेल्पिंग वर्ब सारी फॉर्म्स है, वॉज, वर। ठीक है, अब इसमें हम कौन सी लगाएंगे? दैट आई वॉज द ओनली पैसेंजर लेफ्ट ऑन द बस। सारे चले गए एंड आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट ऑन द बस। सो बी में एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे जहां भी आप बी का हिंट देखेंगे ब्रैकेट में, इट मींस यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यू must get off here, the conductor said. This is as far as we go. We went back now. We are going back now, said the conductor. Right? So, said the conductor, we will go back now. अब हम वापस जाएंगे. Now, how do you solve this one? Yes. You must get off here, the conductor said. अब तुम्हें यहां से उतरना है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं. We are not going to stop here. Yes. You must got off here, the conductor said. This is as far as we go. We will go back now, said the conductor. All right. Now, will versus going to. जिस तरह हम बात करते हैं कि मैं ये करूंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम गोइंग टू हैव टी, मैं चाय पीऊंगा, ठीक है? नाउ आई विल गेट अ कप ऑफ टी, आई एम गोइंग टू गेट अ कप ऑफ टी, लुक सिमिलर. सो विल की जगह हम गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज गोइंग टू इन प्लेस ऑफ विल. नाउ गोइंग टू वी यूज इट फॉर सर्टेनिटी. जब आप बिल्कुल श्योर होते हो, जैसे आई एम गोइंग टू बेड, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बेड, आई विल गो टू बेड, ये दूर की बात है. दिस इज नॉट सर्टेन, मे बी आई विल नॉट. बट व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू लीव नाउ, मैं अब यहां से जा रहा हूं. क्या अभी मैं गया हूं? नहीं, अभी मैं कुछ लम्हे बाद की मैं बात कर रहा हूं. देन यू कैन यूज गोइंग टू. ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस. अब यहां पे गोइंग टू का मतलब चला जाना नहीं है, बल्कि उसको करना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू गेट अ कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप कॉफी का पीऊंगा, पीने जा रहा हूं या अभी पीऊंगा. जस्ट इन फ्यू मोमेंट्स, जस्ट इन फ्यू मिनट्स और इन द नियर फ्यूचर. राइट डाउन समथिंग यू जस्ट नाउ डिसाइडेड टू डू. ऐसा हमने जुमला लिखना है जो हमने अभी डिसाइड किया कि अब हम क्या करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am going to get a cup of tea. All right. State a fact about the future. फ्यूचर के बारे में आप कोई ऐसा फैक्ट बताएं, ऐसी हकीकत बताएं जो आप करेंगे. Yes. You can say, I'll be a doctor in 6 months. ठीक है, make a promise. For example, I will meet you at 10 a.m. I will meet you at 10 a.m. This is like a promise. So this kind of statement is like a promise. ठीक है, कि मैं आपसे मिलूंगा. Again, you can use your future tense. Make a prediction. मतलब फ्यूचर के हवाले से आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से पाकिस्तान
will win the match. ठीक है? So this is a prediction that is going to happen in the future. Write about something you hope will happen. कैसे लिखेंगे? You will use the word hope in it. ठीक है? I hope to get good marks in 10th. Write about something you know you plan to do next week. Yes, that's very good. I'll go to a tour next week. तो इन सारे सिनेरियोज को बताने का मकसद ये था कि इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं. एंड यहां पे आप देखें, आई एम गोइंग टू गेट अ कप ऑफ टी. नाउ आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस. सो स्टेट अ फैक्ट. तो स्टेटिंग अ फैक्ट, या आपने कुछ डिसीजन किया है फ्यूचर में करने के लिए, प्रॉमिस करना है, प्रिडिक्शन करनी है, आप किसी चीज के लिए विश कर रहे हैं, या आपने write about something you know you plan to do next week or maybe next year. In सब के लिए you will use will, all right, or going to accordingly. Now this is a picture that we have already seen yesterday. It contains all of these different variations of present, past and future. Very simple. I do, I am doing. Now ये क्या है? Be है ना? बी है. बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर. जहां भी बी देखेंगे हमें उसको चेंज करना पड़ेगा. एंड ऑल ऑफ दीज हैव, एम एंड विल, शैल, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम टेंस में लाजमी यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल ऑल्सो सी, वी विल रिवाइज समथिंग नाउ एंड देन वी विल सी कि हमने शैल कब यूज करना. ठीक है? यू नो, विल एंड शैल. Will is used for certainty and shall is also like that, but it has a different variation. Now we are going to revise it. The flight takes off at 5:30 p.m. What kind of tense is this? Yes, present simple. Present simple. Amy drinks coffee every morning. Yes, this is also present simple. और ये क्या है? It's like a routine or habit. Ira is reading Sherlock Holmes. जी, this is present continuous. कैसे पता चला present है? is की वजह से. और ing से हमें पता चला that this is present continuous. Now, Aman, the team is playing quite well. जी, present continuous. All right. This is present continuous. Yes. Now, you, Aman. Sam has just gone out. Present perfect. How? Has की वजह से, और यहां पे हमने third form use की. ठीक है? So this is present perfect. I have known Ria for a long time. जी. जी. I have known Ria for a long time. Present perfect continuous. All right. I am writing a new story. Yes, ये present continuous है. The child has been watching television for hours. Yes, present perfect continuous. They have been shopping for days. Yes. Asif has eaten all the cookies. Present perfect. I have finished all my chores. ठीक है? Why not past? Because we have. It rains almost every day in October. It is? Yes, simple present. My uncle is arriving today is present continuous. I have hurt my knee. This is. All right. Yes, I have hurt my knee. Present perfect. The workers have been building the tower for several months. Present perfect continuous. कैसे? Present continuous और ये देखिए, for and then the time period. All right. Now
अब वही रिवीजन, आई होप दैट यू कैन सी, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आप यूज कर सकते हैं, ओके, विल या शैल, एंड देन द, जो हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है, शी विल ईट अ सैंडविच फॉर लंच, शी विल नॉट ईट अ सैंडविच फॉर लंच, विल शी ईट अ सैंडविच फॉर लंच, ऑलराइट, ओके। अब हम देखते हैं हाउ आर वी गोइंग टू यूज गोइंग टू। आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या आप कह सकते हैं आई विल टेक अ फ्यू एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर? यस, but it's more appropriate to say I am going to, because this sounds more determined, certain. Okay? It's going to be difficult to get a job during the summer as the tourist industry is suffering from the economic downturn. So, this is how we usually do. जी? I will be, लेकिन वो फिर continuous, I will be going. Alright? जी, only will या going to. ठीक है? Now, shall is often used as an alternative. Replacement में use होता है will के, and you can see the presence of this expression in famous literature work as well. Shall is frequently associated question forms in contrast with will, which used to form affirmative and negative structures. We use shall in the following situations. Number one is to make offers. When you're offering something, you can use shall. For example, shall I make some tea? Not will I make some tea. Obviously, you are not asking, you are just telling. All right. So, shall I make some tea? Shall we go to the mall? Where shall I drop you? So, these are actually very polite and they are like offers that you are offering something. Obviously, ये सारे future है. This is all in the future tense. तो इसका मतलब है going to भी लगा सकते हैं, will और shall भी हम use कर सकते हैं. To provide suggestions, मशवरा देने के लिए या suggestions देने के लिए, shall we start reading this novel? This is like a question, but it is very polite. All right. Who shall we invite to the party? Shall we go to the coffee shop now? अब ये shall जब past में जाता है तो should हो जाता है. You should not do this. All right. You should not be worried about this. तो वो should का जो पहला फॉर्म है वो क्या है? Shall. Shall is for future. Should and could, should and would is for past. For obligations, you should not do this. This is like more like a advice या instruction या command हो सकती है. ठीक है? To express formal obligations. All right. Formal obligations like you shall not pass. All staff shall provide IDs before entrance to workshop. The accused shall appear in court next week. ये obligation है, यानी ये आपने लाजमी करना है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है. It's like a फर्ज. So you shall not pass. Not pass. आप यहां से नहीं गुजरेंगे. It means this is strictly like an obligation. So कितनी situations है हमारे पास? To making an offer, providing suggestions, expressing formal obligations, and so on. Now, in the simple future, you have two different forms, will and going to or be going to. Though the two forms can sometimes be used one in place of the other. These both are used to express two different aspects and have different meanings. For example, when we are using be going to, I'll be going to, or just going to expresses that something is a plan. You have a plan, like everything is decided. All right, I'm going to do this. It means ये पक्का decision है, ये decided है, ये पूरा thoughtful, ये इसको पहले से सोच लिया गया है, and that's all. It expresses the idea that a person intends to do something in the future. It does not matter whether the plan is realistic or not. Formation. How are we going to form this? For example, you are going to meet her tomorrow. Now, this is a well thought, crafted plan. You are going to meet her tomorrow. For now, is MR जो भी आपने यूज करना है, and यानी यहां पे हमने R यूज किया, I के साथ हम M यूज करते हैं. ठीक है? तो
उसके बाद आप गोइंग टू लगाएंगे एंड देन योर वर्ब. सो इसका मतलब है पहले आप अपने प्रोनाउंस लगाएंगे, गोइंग टू एंड देन योर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट गोइंग टू मीट जेन टुनाइट. प्रोनाउन, देन द हेल्पिंग वर्ब, जो भी आ रहा है यू के साथ आर आता है, एंड दिस इज इन द नेगेटिव फॉर्म, तो not going to, and then the verb, this is the verb, Jane tonight. So this is the basic structure. Now I'm going to bed. Now this is a very, what are you going to do today? Nothing, I'm just going to bed. Have I gone yet? No, but I'm planning to go. इसकी बजाय कि आप कहें कि I will go to bed. ठीक है, ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अभी जा रहा हूं, अभी गया नहीं हूं लेकिन जा रहा हूं, यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू परफॉर्म द टास्क, आई एम गोइंग टू टेक अ कप ऑफ कॉफी. ऑलराइट, so this is better. Going to be आप यूज कर सकते हैं. Now what are we supposed to do is revise the simple future tense. Eat a sandwich, this is a phrase, we are going to turn it into the simple future form. Yes, give me a sentence. Eat a sandwich. सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने इसको बनाना. यस, शी विल ईट अ सैंडविच. गेट अ पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद विल गेट अ gaming partner. All right, so join a group. Yes, Amna will join a group in the class. I will read a book. Get some sleep. She will get some sleep, or she is going to get some sleep. अब going to और will दोनों आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. All right, this simulation link and the worksheet. Yes, this is a new worksheet that I've added. पहले में आपने correct form of future tense use करना है, and then in the second one again you have to fill in the blanks, but you have to use the correct form of the tense. For example, the gardener water the plants. Simple future में will water the plants. All right, is it the same? Okay. All right, if you have not done it, then you can do it. I'll share a new resource very soon, skill sheet, worksheet, एक नई एक्टिविटी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा. Till then, practice your future tense, be it simple, perfect, continuous or perfect continuous. And remember, उसमें आप अब जो एक्टिविटीज करेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें shall का भी इस्तेमाल करेंगे, going to का भी इस्तेमाल करेंगे. ठीक है? This is all about today's lecture, and all these resources. Since this is a revision lecture, so I'll send more of these resources for you to practice. Thank you so much. Allah Hafiz.